IIM के हर्बल गार्डन में देखिए ये बुश कितनी फ्लोरीफेरस श्रब है। ये हाइमेनोडिक्टियान, ये जो है स्पर्मेडिक्टियान, नॉट हाइमेनोडिक्टियान, स्पर्मेडिक्टियान स्वावियोलेंस और हैमिल्टोनिया स्वावियोलेंस, जो अट्रैक्ट करती है हनी बीज को भी। और फ्रेगरेंट फ्लावर्स हैं। कॉफ़ी फैमिली का ये प्लांट है, या कदम्ब फैमिली का, रूबिएसी का, और वही कैरेक्टर है इसमें। लीव्स आर अपोजिट, फ्लावर्स आर ट्यूबुलर, सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग गार्डन श्रब। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सोंचल होती है, सोंचल का तो हम साग खाते हैं, लेकिन ये गार्डन मैलो है जिसको बोलते हैं मालवा सिल्वेस्ट्रस। तो ये 1 मीटर ऊंचा जो प्लांट है, ये भी बहुत ही पॉपुलर गार्डन ऑर्नामेंटल है। और इसके साथ ही आप एक और देख रहे हैं, ये लाल फूलों वाला गार्डन फ्लावर, जो हम अलसी खाते हैं, फ्लैक्स लाइनम, जो कल्टीवेशन में होती है और जिसके सीड्स आर मेडिसिनल, लाइनम असएटेटिसिमम, उसी के ये दूसरी स्पीशीज़ है जो गार्डन में हम उगाते हैं इसकी शोभा के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए, लाइनम ग्रैंडिफ्लोरम। तो ये भी अपने शबाब पर है, क्योंकि अभी हमारा फॉरेस्ट्री डे भी आने वाला है, नवरोज़ आने वाला है 21 मार्च को। और यही टाइम जो है जम्मू में स्प्रिंग ब्यूटी, स्प्रिंग ब्लॉसम्स का है। और ये उसके बाद ये फूल जो हैं नहीं दिखेंगे हमें। तो एक और आप देख रहे हैं, ये ख़ास जो पेपर डेजी भी इसको कहते हैं, अगर इसको टच करेंगे तो बड़े इसके पेपर की तरह हार्ड से इसके फ्लावर्स रहते हैं, हेलिक्राइसम ब्रैक्टिएटम या पेपर डेजी फ्लावर। तो ये जो है एवरलास्टिंग डेजी भी इसको कहा जाता है। ड्राई डेकोरेशन में इसको हम रख सकते हैं। ये सूखे हुए फूल जो हैं महीना 2 महीने भी रह सकते हैं हमारे गमले में। ये आप देख रहे हैं डेलिया, डेलिया का प्लांट है, डेलिया पिनेटा। और ये कैलेंडुला है, कैलेंडुला ऑप्शनैलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है वूंड हीलिंग के लिए, एंटीसेप्टिक। और इसकी क्रीम भी मार्केट में है, लेकिन जहाँ पे एज ए गार्डन ऑर्नामेंटल फैसिनेटिंग प्लांट इसको लगाया गया है। तो ये जो है समर क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम कारोनेरियम। और ये बैचलर्स बटन और कॉर्न फ्लावर जिसको बोलते हैं सेंटारियम सायानस, ये भी गार्डन में एक ऑर्नामेंटल प्लांट के फ्लावर के रूप में इसको लगाया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपियम की ही गार्डन वैरायटी है। ओपियम जो है वो पापाबर सोमनीफेरम होता है, लेकिन ये उसी की रेड वैरायटी है जो लाल फूलों वाला। और जो पेटल्स हैं वो भी बहुत बल्ब्स में हैं, लेकिन जो नॉडिंग इसकी फ्लावर बड है, दैट इज़ यूनिक करैक्टर इसका। लेकिन जब फ्रूट होता है, फ्रूट सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन जो बड है वो नॉडिंग होती है। तो पापाबरेसी फैमिली का प्लांट। तो एक और देखिए आप, ये हमारा क्लार्किया है। तो क्लार्किया के प्लांट, जो गुडेशिया भी इसको कभी कभी कहा जाता है, ये जो ओनेग्रेसी फैमिली का, ये भी अनदर गार्डन ऑर्नामेंटल। ये जो है कैलिफोर्नियन पॉपी है, अभी फूल इसके बंद हो चुके हैं, शाम का वक़्त है, एल्शोल्जिया कैलिफोर्निका। और ये है कंसोलिडा एजेसिस, जिसको कहते हैं लार्क्स पर। और ये एक और पापावर है, पापावर रोयास, और इसमें भी हनी बीज हैं। ये भी गार्डन ऑर्नामेंटल। तो एक और प्लांट आप देख रहे हैं जिसको गुलमर्ग में तो हम बहुत देखते हैं समर में, लेकिन जम्मू की टेम्परेचर जो राइज़ होने से ये अभी फ्लावरिंग में है, लुपिनस पॉलीफिलस। ये एक सेज है, रेड सेज। ये तुलसी बंधु है, तुलसी परिवार का प्लांट, साल्विया स्प्लेंडेंस। और ये डार्क फ्लावर्स हैं जिनको एंटीराइनम मेजस बोला जाता है। और यहाँ पे लाइनेरिया के ब्लॉसम्स भी हैं, टोड फ्लाक्स भी इसको कहा जाता है। और ये डायंथस है, डायंथस बारबेटस। और ये तो खाने के लिए वेजिटेबल के तौर पे इसको बोलते हैं लेटस। एक श्रब है, अब यहाँ फ्लावर तो इसके हो चुके हैं,
लेकिन जब बसंत पंचमी के आसपास इसकी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग थी। बसंत, जिसको उत्तराखंड में प्योली बोलते हैं, और प्योली नाम से काफ़ी उत्तराखंड में इसके गाने भी हैं। तो 14 मार्च को अभी फूलदेई का त्यौहार हुआ कुमाऊं गढ़वाल में, और श्रीनगर में हुआ सोंठ का फेस्टिवल। तो उस वक्त ये परंपरा है कि बच्चे जो हैं जंगल में जाते हैं और ये बसंत प्योली इसके और बुरांस के फूल और कई किस्म के दूसरे फूल जंगल से लाते हैं और देवी देवता के चढ़ा करके अपने बुजुर्गों को बस उसको भेंट करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो फूलदेई का जो फेस्टिवल है, त्यौहार जो है, वो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ही है। तो ये भी आप देख रहे हैं रीन वार्शिया इंडिका। ये आप देख रहे हैं फ्लावर्स, ट्रम्पेट लाइक फ्लावर्स, greenish white, and they look like dhatura. In fact, previously it was called as dhatura suabulens. Presently it has its own genus, Brugmansia suabulens. So this is not native to India, basically native to America, but introduced in garden as garden ornamental plant. Another very peculiar plant and rather medicinal plant is Comfrey. Botanically it is called as Symphytum officinale. You see its flowers. Basically it belongs to Ratanjot family or Kahazzavan family, which is Boraginaceae. So this particular plant is basically introduced in Indian Institute of Integrative Medicine Herbal Garden, and this is useful in healing the fractures, bone fractures. So this is quite medicinal plant, and it has the beauty also. Comfrey, popular name and botanical name is Symphytum officinale. The plant, which is a hepatoprotective shrub, basically squirrel's tail. This is Colebrookea oppositifolia, popularly called as dos or swali in Dogri language, and Triplium has done very good work on this particular plant, and its extract has been found to be hepatoprotective. This particular plant, you are able to see, this is Bacopa Moneria, basically near Brahmi. It usually grows in association with paddy crop, and it loves amphibious kind of habitat. So this is different from Centella asiatica. Here the leaves are Parchuleka like, and they are opposite. Bacopa Moneria, and this is Chlorophytum Safed Musli. This is again a medicinal plant from the Western Ghats, and this is popular Aloe Vera, which is a succulent and a reputed medicine plant. It is in flowering now, so you can note down the flowers also, which are tubular and orange pink. The succulent leaves, they are pounded and also made into juice, and this is very useful for skin care, liver care, and this is called Aloe barbadensis or Aloe Vera, and in Dogri it is called as Quad Kandal, in Sanskrit Gihi Kumbar. Another reputed medicinal plant one can see is Ashwagandha. This is also known as Indian ginseng. Withania somnifera. Somni means sleep, fera means bearing, which induces sleep. So it is used as a tranquilizer, sleep inducing. It's all parts, leaves, roots, flowers, seeds. They are used as panchang in Ayurveda. But actually the root powder has the odor of urine of horse. So in Sanskrit it has been named as Ashwagandha. Ashwa means horse and Gandha means odor, which gives the odor of horse urine like. So
This particular plant is under cultivation and a reputed Ayurvedic plant. You see this Indian plant from the Western Ghats. It is a reputed anti-cancer plant known as Nathapoditis pneumoniana. This plant yields camptothecin. This plant is native to Western Ghats but introduced in Jammu. So this is a reputed medicinal plant, not much familiar with Jammuites. You see this is all shatabar, asparagus officinalis. This is again under cultivation. We see in forest asparagus ascendens, that is shrub, but this is a climber, so it is climbing, it needs support, and it has the swollen roots which are edible and medicinally very important. On this plant you see so many fruits which have turned red. Asparagus officinalis with swollen roots and very useful immunity booster, and it provides strength to the body. So this is also under cultivation. Another plant which also grows in wild, this is Plumbago Zalanikam, locally called as Chitra in Dogri, because it has the Sanskrit name Chitrak. Its roots are also red, and this particular plant is reputed abortifacient plant. This grows wild in Shivaliks, and even the Plumbago blue butterfly uses this plant as a butterfly host to lay the eggs. You see the plant which is eagle marmillas, and you can note down the fruits also. And this particular eagle marmillas or bale or stone apple or wood apple, it has health benefits. It is useful in amoebic dysentery. It is useful in combating diabetes, and it has 3 leaflets which look like Trishul of Lord Shiva. And this is the plant with thorny branches belongs to the orange family, lemon family. Bale, eagle marmillas. But this is the plant which also has the local faith, religious faith, as Lord Shiva's tree. We have also the Dioscorea, but this is the Dioscorea composita plant, basically the source of Diosgenin. So this is again a climber, but Dioscorea we eat as edible. Third, that is Dioscorea bilophylla. We also have Kithi, which is Dioscorea bulbifera, or called as Varahi Kanda, which should not be confused with Vidari Kanda. Vidari Kanda is Curaria tuberosa. So you can note down the fruits of eagle marmillas also, bale, stone apple or wood apple, very hot. Once you break the fruit, then you have very soft pulp which can be made into sharbats. In this you are able to see the plant which is called as the Lasuda, cordia. Even its fruits are pickled, and wood is useful for the bell curves. Another tree which is unique, and leaves although look like neem, but it is not Azadiracta indica, it is not neem, and it has the fragrant champa like flowers. So this is called as Neem Chameleon. So these are its leaves, and this is the tree which is called Melanchonia hortensis. This produces the fragrant white flowers, tubular flowers, during the monsoon, July, August. Now it is without
flowers. Also called an Indian cork tree, or its thick cork. And another plant which is called as stevia. Stevia rebaudiana. This is also growing here. And this is the wild edible herb called as shepherd's purse, Capsula bursa pastoris. All this is Capsula bursa pastoris. This is edible, but now it has already flowered and fruited, so now it cannot be used. This is wild allium called as Lepidium didymus. Earlier it was known as Coronopus didymus, also as Vera didyma. And this is another plant which is called jungly palak, Rumex dentatus. You are able to see the beautiful flowers also, and one of the flower which is adding elegance and color is Larkspur consolida ajacis. Another is Helichrysum bracteatum, paper daisy flower, and even the Phlox drummondi. This particular flower is Verbena. This is Verbena bipennatifida, and this is garden poppy, papaver. This is Petunia. And here you have, behind you see inflated, which is called as the Rumex vesicarius or bladder dock. And this is Tagetes Genda. And here you have Christmas lalpatti, also known as Euphorbia pulcherrima or Poinsettia pulcherrima. And this is Linum grandiflorum. And you have again, all this is Rumex vesicarius. Here is the Dahlia, and here is Chrysanthemum coronaria, popularly called as Metricaria, summer chrysanthemum.